introduced significant surgical burden and the long bone fracture concurrent with the complex forearm fracture and dislocation, which we call the Gallagher fracture and dislocation. And this is the X-ray of the femur, the sharp femur, the mid-third fracture of a 17-year-old gentleman, and the forearm Gallagher fracture, severely displaced fracture. Inner canal, it was narrow, so the nailing was difficult. The standard treatment is nailing, and ideal treatment for this Gallagher fracture is the plating. But I opted nailing, although it was difficult nailing in the bone fracture and the slight distraction, the tense nailing for Gallagher fracture. And this is not reported in severely displaced fracture. The tense nailing should be covered. In fact, there is no literature present for the tense nailing for this type of Gallagher fracture. So we did for the minimally, because it is minimally invasive, and periosteal and endosteal blood supply are maintained in both fracture, and the interlocking nailing was done in the sharp femur, and only 9 millimeter nail could be negotiated because the narrow medullary canal. So there is slight distraction, as you can see in this picture, but we did locking. It was difficult nailing. So the goal was to provide sufficient stability for early mobilization despite of an anatomical constraint, and implant was 9 millimeter nail, and technique was minimally invasive. And whereas in this left radius, the Gallagher fracture, we did tense nailing. In this case also, the 2 millimeter tense nail was used. Usually you use a 2.5 millimeter tense nail, but we use 2 millimeter tense nail. Still there is distraction at the fracture site. So this was the problem with this due to the narrow canal. But this is the 6-month follow-up. You can see I sent this X-ray in Indian Orthopedic Research Group, IORG, and that was to revise this case, bone grafting and plating for Gallagher fracture. So, but I left it and wait for, this is the 8-month follow-up. Still there was better union than 6 months, but this was not hypertrophic, and this is 11 months, you can see. So after waiting 11 months, the union is complete in both the fracture. The secondary canals have been formed. It was not hypertrophic non-union, it was the union, secondary union was taking place, although it was delayed union. But this is the functional result. You can see that supination, pronation, and wrist movement, flexion and extension all are present. And the tense nailing is provides sufficient stability for secondary union even in length critical fractures, because the narrow canal and the length should be maintained to, and DR, UJ should be reduced properly. We followed the throughout the 11 months for this maintenance of the length and DR maintenance. And advantages of this minimally invasive approach for Gallagher fracture and femur is minimally invasive and reduce operative time and significantly minimize minimum blood loss. And this is the conclusion that the TENS is viable, effective alternative for plating for the complex forearm injury. The successful management of this double fractures case confirmed that interlocking nailing of femur and TENS
else higher union rates and excellent functional outcomes. This approach should be considered for Gallagher fracture in adult after further studies. Because I think this is the first case in severe Gallagher fracture. I did So this case was published in International Journal of Orthopedic Sciences. The traditional teaching that the 99.99% of these cases died without any significant deformity. Hello friends, today I am going to give a demo of interlocking nailing in छपरा के डॉक्टर आरसी ठाकुर ने हड्डी फ्रैक्चर के इलाज में क्रांतिकारी तकनीक विकसित कर देश भर में पहचान बनाई है। उनकी तकनीक से 35 लाख रुपए तक का महंगा इलाज मात्र 35,000 में संभव हो सका है। ऑर्थो सर्जरी में योगदान के लिए गुवाहाटी में आयोजित इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि छपरा, सारण और बिहार के लिए गर्व की बात है। इनोवेशन अवार्ड इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गुवाहाटी IOA 25 में दिया गया है। और यह अवार्ड पूरा भारतवर्ष में 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिला है, जिसमें बिहार से मेरा ही नाम है। अतः छपरा जिला में जिला का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या बिहार का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा नाम आया है। Hello friends, I am Dr. RCT Ortho, orthopedic surgeon, Chhapra, Bihar. Today I am going to present my innovative work named Dr. Thakur Innovative Technique of Suprapatellar Nailing of Tibia. Tibial fractures are most common among the long bone fractures in human body. These are usually caused by high energy trauma like fall from height. Study shows Dr. Thakur Innovative Technique of Suprapatellar Nailing of tibia is safe, cost-effective method of treatment for metaphyseal tibial fracture. Anterior deformity becomes a challenge. Suprapatellar nailing becoming popular choice for treating metaphyseal fractures. It is highly specialized surgery and we are conducted on 25 patients to fix their tibial fractures. The patients having tibial fractures with no involvement of articular surface were included in this study. Age of the patient ranged between 18 to 60 years and they had no comorbidities. 20 degree of flexion at the knee joint, either transverse or longitudinal skin incision were given, but longitudinal split of quadriceps tendon done. Knee joint entered from above, proper and protective sleeve from PFNA to set inserted. Entry point is just medial to the lateral tibial spine. The guide wire, first malleable guide wire, were introduced after severe bleeding, fracture reduction, and confirmed by fluoroscopy, mounting of the nail with appropriate size over the color-coded tibial nail extractor done. Introduction of appropriate nail size over the guide wire done in proper position with the help of color-coded tibial nail extractor. Locking both proximal and distal done by freehand technique. No jig were used. Wash and repair of quadriceps
Reamer, these are the passage of slave, dropper and hard guide wire in the retropatellar space in AP and lateral view. Passage of reamer over the guide wire after percutaneous reduction with the reduction forceps in AP view, and this is in lateral view. Nail entry over the guide wire and nail entry in distal fragment in AP view. Nail entry in distal fragment in lateral view, and then both locking screw introduced in proximal fragment. In AP and lateral view, all the 3 screws introduced in distal fragment by freehand technique. This is the clinical picture. Proximal locking done by freehand technique. Post-operative follow-up steps. First post-operative day plus minus 6.5 seconds. The range being 10 to 50 seconds. The average time of union fracture was 8 weeks after surgery, with fracture healing time was 12 weeks. Average hospital stay was 10 to 12 days. All patients followed up after 2, 3, 6 and 12 weeks. Those who could not return for follow-up, telephonic follow-ups were done and called for follow-up in hospital. No complication were observed. No patient experienced any loosening or breakage of screw or nail. No one complained of knee pain. No reduction loss or significant displacement of fracture occurred after surgery. At final follow-up, 21 cases found excellent and 4 good results. In none of the patient, removal of nail was done for any cause. These are the results. Fracture, lower third tibia, APL lateral view, post-op X-ray of lower third tibia, APL lateral view. Fractures, lower third tibia, again second case, APL lateral view, post-op X-ray picture, APL lateral view. This is third case of fracture of upper third tibial fractures, APL lateral view, post-op, and this is the clinical pictures, 3 weeks follow-up. Okay. Fourth case, pre-op X-ray, upper metaphyseal fracture of tibia, and this is the post-op. This innovative technique is very, very cost effective. In fact, no cost is incurred for this suprapatellar technique. Whereas the standard instrument sets are very, very costly. This technique can be adopted in smaller and medium class orthopedic hospital. If the only disadvantage of this technique is the slightly more radiation occurs because the locking, both proximal and distal, are done with freehand technique. But this can be lessened by gaining more and more experience in freehand technique for locking proximal and distal tibia. Thank you. Hi friends, today I will discuss more about the orthopedic implants. To recapitulate the whole thing that
In 1939 में फर्की केनेल का आविष्कार हुआ और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग हुआ। और उसके बाद 1950 में रस ब्रदर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उन्होंने आविष्कार किया और इसको बोथ बोन फोर आर्म फ्रैक्चर में उपयोग किया गया। उसके बाद इंटरलॉकिंग का जमाना आया और इंट्रापर्टिकुलर रूप से इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जिसे केंट ने पॉपुलराइज किया 1970 में। और उसके बाद इंट्रापर्टिकुलर रूप के बाद जो बीच में प्लेटिंग का दौर आया, जिसमें शुरुआत में हेवी ड्यूटी प्लेट का यूज किया गया, फिर डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट को यूज किया गया, फिर लो कॉन्टैक्ट डीसीपी LCDCP का यूज किया गया। उसके बाद एडवांस इंटरलॉकिंग करने जमाना आया। पहले इंटरलॉकिंग नेलिंग केवल डायफिशियल फ्रैक्चर में यूज होता था, फीमर का हो चाहे टीबिया का हो चाहे ह्यूमरस का हो, लेकिन बाद में मेटाफिशियल फ्रैक्चर के लिए भी एडवांस इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जैसे कि लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड upper end of the upper third of the femur, subtrochanteric fracture, trochanteric fracture and supracondylar fracture के लिए DFN, supracondylar fracture के लिए DFN और subtrochanteric fracture और trochanteric fracture के लिए PFN यूज होने लगा। फिर PFN A आया ऑस्टियोपोरोटिक बोन के लिए, PFN A2 आया, इसको यूज होने लगा। आजकल ऑस्टियोपोरोटिक बोन का ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में PFN A2 ही यूज करते हैं। और मेटलर्जी के बारे में शुरू में स्टील का उपयोग हुआ, जो ये तो बहुत स्टीफर होता है, about 10 times stiffer than the cortical bone of the human body. So ये लोड बियरिंग हो जाता है और लोड शेयर नहीं करता है ह्यूमन बॉडी से। तो कैलस जो बनता है उसमें वीक बनता है। इसके बाद टाइटेनियम में नेल्स, जो नेल्स बनते हैं वो टाइटेनियम एलॉयज के बनते हैं और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कॉर्टिकल बोन के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इस तरह से उसको एलॉय बनाया जाता है या इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। सो इट इज मोर बायो फ्रेंडली एंड बायो कंफर्टेबल। उसके बाद आया कार्बन फाइबर्स का, तो कार्बन फाइबर्स का बिकॉज इट इज ट्रांसलूसेंट, इट इज नॉट रेडियो ओपेक, so it is very useful in cancer patient, pathological fracture due to bone tumor। उसमें क्या प्रोग्रेस है ट्यूमर का, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे रिलेशन हो रहा है कि नहीं, चारों तरफ ट्यूमर के हम लोग देख सकते हैं। और फ्रैक्चर का कैलस बन रहा है कि नहीं ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो ट्रांसमिशन होता है, रेडियो ओपेक नहीं होता है और कोल्ड वेल्डिंग नहीं होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये स्क्रू को निकालना जो है आसान है और काफी जो बहुत हाई फैटिक स्ट्रेंथ होता है इसका, जो काफी ड्यूरेबल होता है और फ्रैक्चर हीलिंग का भी टूटता नहीं है, इसमें कोरोजन नहीं होता है और कार्बन फाइबर्स में कोरोजन नहीं होता है और कैंसर पेशेंट में यूजफुल है और स्ट्रेस से भी नहीं होता है जो कि मेटल में होता है और वीक कैलस बनता है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कैलस बनता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बेंड नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के समय हम लोग प्लेट को बेंड करते हैं ताकि बोन का शेप ले ले, वो मैनुअली बेंड करते हैं, तो उसको आप बेंड नहीं कर सकते। ये टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं होता है। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
I am Dr. R.C. Thakur, orthopedic surgeon, Sabra, Bihar. Today I will give a demo of PFN tattoo surgery for a osteoporotic patient. ये है मिस्टर प्रशांत कुमार जो असम से आए हैं। उनके दाहिने कूल्हे का एक्सरे पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिफॉर्म्ड हो गया है और एक दूसरे में चिपक गया है। कूल्हे का हड्डी कूल्हे का गोला कप में चिपक गया है और काफ़ी हड्डी बन गया है। उनके इसके कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट में उनको हो रहा था। वे ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे कुर्सी पर। ये है एक्सरे पिक्चर जिन्हें टोटल कूल्हा उनका बदल दिया गया है ऑर्थो सर्जिकल केयर सेंटर में। और 10 दिन के बाद वो वॉकर पे चल रहे हैं और फिर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि उतरते समय पहले प्रेशर वाले पैर कूल्हा को बदला गया है, उसको पैर रखना, उस पैर को रखना है। उसके बाद अच्छे पैर को रखना है और चढ़ते समय पहले अच्छे पैर को ऊपर रखना है। उसके बाद जिसमें कूल्हा को बदला गया है उसको रखना है। ये अब ऑपरेशन के बाद ये कुर्सी पर बैठ सकते हैं, इवन लो चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल और पेनलेस मूवमेंट अपनी ज्वाइंट आप देख सकते हैं किस तरह से खुद खड़े हो जा रहे हैं और लो चेयर पर भी आराम से बैठ जा रहे हैं। ये बिना सहारा के 10वें दिन बिना दर्द के चल पा रहे हैं।